What is Coulomb's law? Coulomb's law kahaku कहନ୍ତି? The electrostatic force between two stationary charges is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square root of their distance between them. यार formula होची Fa directly proportional Q1 Q2 inversely proportional R square. R होची से distance. तो Fa is equal to beta Q1 Q2 by R square. बीटा हूँ जी कॉन्स्टेंट यार वैल्यू हूँ 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन 0 हूँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन आर हूँ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन 0 रो वैल्यू हूँ 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म रे यार फार्मूला कौन हम मनकर दुटा चार्ज ने Q1 Q2 ता भीतर डिस्टेंस R1 R2 we did not force on Q1 due to Q2 F12 force on Q2 due to Q1 by F21 the 2-point charge Q1 and Q2 have been numbered 1 and 2 for convenience and the vector leading from 1 to 2 is denoted by R21 is equal to R2 minus R1 चित्र रे देखा जाउची unit charge electric charge is the property of matter that causes it to experience a force when placed in an electric field ampere second or coulomb is the SI unit of charge charge ro SI unit hoji ampere second or coulomb 1 coulomb of charge flows through the current carrying conductor when 1 ampere of electric current flows through it for 1 second चार्ज को लिखा जाए Q इज इक्वल टू I इंटू टी I हूँ करंट T हूँ टाइम एबे जानिबा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जाको K भाव में लिखा जाए एप्सिलॉन R इज इक्वल टू K इज इक्वल टू F1 बाय F2 यार डायमेंशन नाही 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टार्ट कूलम सेपरी रिलेटिव परमिएबिलिटी एप्सिलॉन R इज इक्वल टू एप्सिलॉन M बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू FM बाय F नॉट फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मनकर दुईटे डिस्क्रीट चार्ज होची Q1 एंड Q2 कूलम्स ला पकेले F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर R वेक्टर जोंठे K होची 1/4π एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर फॉर फ्री स्पेस एप्सिलॉन 0 एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस किंतु डाइलेक्ट्रिक मीडिया हले K इज इक्वल टू 4π एप्सिलॉन हबो वेयर एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R Epsilon R is relative permeability of medium. The force is directed along the line joining the two charges. It is repulsive if the forces are same sign. It is attractive if they are opposite sign. Force on QP due to QI is Fi is equal to K QI QP RI vector विभक्त RI रो square. Where I is equal to कौन ना 1 to 6. Total force due to 6 charge epsilon n K QI QP divided by RI square into RI vector. RI vector is distance between QP and QI. RI vector is a unit vector along the direction of force. What is continuous charge distribution? In a continuous charge distribution, all the charges are closely bound together, having very less space between them. But this closely bound system does not mean that the electric charge is interrupted. It is clear that distribution of separate charges is continuous, having a minor space between them. केते प्रकार तीन प्रकार linear charge distribution, surface charge distribution, volume distribution charge. Linear charge distribution होची जदि चार्ज टी डिस्ट्रीब्यूटेड लेंथ ऑफ कंडक्टर ऊपर होई न थाए ताको linear charge distribution कहि थांती एको लिखा जाता लैम्बडा रूप रे लैम्बडा इज इक्वल टू dq by dl यूनिट होबो कूलम पर मीटर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एको लिखा जिवो सिग्मा रूप रे यार फार्मूला होबो del q by del s इज एन एरिया एलिमेंट ऑन द कंडक्टर और सरफेस del q इज चार्ज यूनिट होबो कूलम पर मीटर स्क्वायर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एको रो रूप रे लिखा जाय थे del q by del v इज वॉल्यूम del q इज चार्ज यूनिट होबो सेंटीमीटर पर मीटर क्यूब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होबो del E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन 0 rho del V by R square into R vector. Electric field, these forces created by charged particle may be represented in terms of electric field.
For a system two discrete charge Q1 and Q2, theta discrete charge Q1 Q2 pi, the charge Q1 creates an electric field E1, Q2 creates an electric field E2. From Coulomb's law, electric field magnitude E1 is equal to K Q1 by R square. From Coulomb's law, E2 is equal to K Q2 by R square. The direction of electric field and magnitude vary smoothly in space, allowing it to represent electric field line. The modified space around the charge called electric field. The lines of force never pass through the conductor. 1 unit positive charge gives 4 pi lines of force in air. चित्र रे फील्ड लाइन ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. फील्ड लाइन ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज आर रेडियली आउटवर्ड. तो बाहर को आड़ू थाए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, नेगेटिव पॉइंट चार्ज रेडियली इनवर्ड भीतर आड़ू थाए. किंतु इलेक्ट्रिक फील्ड रो डायरेक्शन थाए is simply given by the tangent to the field line through the point. आउ कौन प्रॉपर्टी अच्छी फील्ड लाइन रो, दे कैन नॉट इंटरसेक्ट इच अदर. से माने परस्पर सहित इंटरसेक्ट करि परिबे नै. They start from positive charge and end at negative charge. They do not form closed line. There is a higher density of electric field line in a region with high electric field and weaker density of line where the field is weaker. Electric field due to a point charge. तोटे Q0 हूँ गोटे टेस्ट चार्ज जोटा कि M ठारे अच्छी. Q0 ठारे फोर्स केते हबो ना F वेक्टर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाय dq t वेक्टर. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ केते हबो E इज इक्वल टू F बाय Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय dq d वेक्टर. तो d d कटि गले 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय d स्क्वायर. तो d जगह में r मथे नै परिबा. Q आउ Q0 मध्य डिस्टेंस था d तो आम r मध्य नहीं पार. r ना हम E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाय r स्क्वायर. E हूँ गोटे वेक्टर क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेरी विथ पोजीशन. अब जानिबा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल. तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन एक्सियल लाइन बाय एंड ऑन पोजीशन केते हबो ना E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2p बाय r3. p कोन ना पॉइंट सिचुएटेड एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम O. इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन E is equal to 1/4 pi epsilon naught P by RQ. Electric field at any point E is equal to 1/4 pi epsilon naught into P by RQ root over 1 plus 3 cos square theta. Electric field uniformly charged sphere. E sphere is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R square R cap. जोंठारे smaller greater than capital R outside. E sphere is equal to 0 जोंठारे smaller less than capital R inside. Electrostatic potential क्या कहते हैं? Electrostatic potential which determines the direction of flow of charge between two bodies. दुईटा बॉडी मध्य जो दिग फ्लो ऑफ चार्ज दिग जे दर्शाए से होची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यार ये गोटे स्केलर क्वांटिटी. यार यूनिट होची SI यूनिट 1 वोल्ट. 1 वोल्ट होची 1 जूल पर कूलम. 1 वोल्ट होची 1/300 स्टार्ट वोल्ट. 1 वोल्ट होची 10⁻18 हाफ वोल्ट. ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल E axial is equal to 2 into E equatorial. Electric potential due to a point charge. The electric potential at any point at a distance smaller from the positive charge plus Q is shown as V is equal to 1/4 pi epsilon naught Q by R. एटार R होची position vector of the positive charge, Q होची source charge. Electric potential due to multiple charges Q1, Q2, Q3 respectively distance R1, R2, R3. Electric potential at a point due to a group of point charges is the algebraic sum of all potential due to individual charges. V is equal to 1/4 epsilon naught summation of I is equal to 1 to n Qi by Ri. Electric potential on axial line dipole V is equal to 1/4 pi epsilon naught P by R square. On equatorial line V is equal to 0. At any point V is equal to 1/4 pi epsilon naught P cos theta by R square. Relation between E and PP, electric field and electric potential. E is equal to KQ by R square, the vector. V is equal to KQ by R vector. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 to the power minus 12 Ri. 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. 1 kinetic energy is equal to 1 electron volt. ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ୍ ଏନର୍ଜି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ଏ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଫ୍ ପଏଣ୍ଟ ଚାର୍ଜେସ୍. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बाहर करबा अधिक चार्जेस द्वारा. तो कौन लिखा है ना वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन होल्ड टू पॉजिटिव चार्जेस. दुईटा पॉजिटिव चार्ज Q1 Q2 थिबो.
ता भीतर डिस्टेंस आर थिबो ताले कौन हम ना इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द टू बॉडी सिस्टम and can be recovered by the work done by released charges. The electric potential energy of a system of fixed point charges is equal to the work done by the external agent to assemble the system, bringing each charges in form an infinite distance. U12 हब K Q1 Q2 by R. U होचे तेरे potential energy for system of 3 charges. जदि 3टा चार्ज अच्छी Q1 Q2 Q3 गोटे त्रिभुज आकार अच्छी ताले तार जदि नेट पोटेंशियल एनर्जी बाहर करें ताले केता हो यू नेट इज इक्वल टू U12 प्लस U23 प्लस U31 इटीसी बाय एक्सेट्रा हम U इज इक्वल टू K ब्रैकेट रे Q1 Q2 बाय R12 प्लस Q1 Q3 बाय R13 प्लस Q2 Q3 बाय R23 इज इक्वल टू K समेशन ऑफ QIJ बाय RIJ. व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? Electric flux is a crucial concept in electromagnetism that quantifies the interaction between electric field and surface. Mathematically represented as the surface integral of electric field over a surface area, electric flux is essential for understanding various electrostatic phenomena. Key examples include Gauss law, which relates to electric flux to the net charge enclosed by a closed surface, and Faraday's law of electromagnetic induction, where the rate of change of electric flux determine the induced electromotive force. SI unit of electric flux, voltmeter or Newton meter square per coulomb. The total number of electric field lines passing normally through an area is called electric flux related to that area. Electric flux depends upon phi directly proportional to electric field, phi directly proportional to area, phi directly proportional to angle cos theta, where theta is angle between direction of area element and direction of electric field. Combining 3, phi directly proportional to EA cos theta. Phi is equal to EA cos theta. In vector form, phi is equal to E vector into A vector. Phi is a scalar quantity for closed surface. Phi is equal to closed integral of E dot ds. जदि थीटा 90 डिग्री हुए ताले phi 0 हम. Inward flux सब negative, outward flux positive. The electric field line represents magnitude and direction of electric field. Important point: net flux through a closed surface for a uniform field always 0. Net flux through a closed surface is difference of field line exiting the surface and field line entering the surface. ଏବେ ପଢିବା Gauss law and its application. According to Gauss law, the total flux linked with a closed surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the closed surface. Closed integral of E dot ds is equal to 1 by epsilon naught q. Gauss law formula: phi is equal to q by epsilon naught. Q total charge within the given surface, epsilon naught electric constant. Application of Gauss law: first, in the case of charged ring of radius capital R on its axis at a distance small x from the center of the ring, capital E is equal to 1 by 4 pi epsilon naught qx by r square plus x square whole to the power 3 by 2. At center x is equal to 0 and E is equal to 0. Case 2, of an infinite line of charge at a distance smaller, E is equal to 1 by 4 into pi r epsilon naught into 2 pi divided by r is equal to lambda by 2 pi r epsilon naught, where lambda is the linear charge density. Case 3, the intensity of electric field near a plane sheet of charge E is equal to sigma by 2 epsilon naught k, where sigma is equal to surface charge density. Case 4, the intensity of electric field near a plane charge conductor E is equal to sigma by k epsilon naught in a medium of dielectric constant k. If the dielectric constant medium is air, E air is equal to sigma by epsilon naught. Case 5, the field between two parallel plates of a condenser E is equal to sigma by epsilon naught, where sigma is surface charge density. ଏବେ ଜାଣିବା capacitor କାହାକୁ କୁହନ୍ତି. What is capacitor? A capacitor is a two-terminal electrical device that can store energy in the form of an electric charge. It consists of two electrical conductors that are separated by a distance. The space between the conductor may be filled by vacuum or with an insulating material
known as dielectric। कोई कैपेसिटर दीटा टर्मिनल तार थिबो से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करि परथबो और ता दीटा कंडक्टर भितर डिस्टेंस थिबो और से कंडक्टर भितर गोटे डाइलेक्ट्रिक जिनिस थिबो। एबे जानिबा कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दीटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दीटा एका प्रकार कंडक्टिंग प्लेट जार सरफेस एरिया कैपिटल ए ता भितर डिस्टेंस होची स्मॉल डी और जिते वोल्टेज भी अप्लाइड करा जाए प्लेट को से कौन करता है ना क्यू चार्ज स्टोर करता है। फोर्स बिटवीन चार्जेस इंक्रीजेस विथ चार्ज वैल्यूज एंड डिक्रीज विथ डिस्टेंस। द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गिवन बाय द फॉर्मूला C इज इक्वल टू इप्सिलॉन नॉट A बाय D। एंटर कैपिटल ए होची एरिया स्मॉल d होची डिस्टेंस। कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर दुईटा concentric conducting spherical cell of radius capital R1 and capital R2 दीटांकर equal and opposite charges plus q minus q respectively। The electric field between cells is directly radial outward। The magnitude of the field can be obtained by applying Gauss law। The capacitance of spherical conductor formula C is equal to 4 pi epsilon naught R1 R2 by R2 minus R1। Factor affecting capacitance dielectric plate spacing area of the plate proportional 1 by D C proportional capital A। What are the application of capacitor? Capacitor for energy storage 18तम सेंचुरी कैपेसिटर यूज होता इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने बहुत एप्लिकेशन एनर्जी सोर्सेस पे व्यवहार करा कैपेसिटर को ऑडियो इक्विपमेंट कैमरा फ्लैशेस पावर सप्लाई मैग्नेटिक कॉइल लेजर। कैपेसिटर फॉर पावर कंडीशनिंग कैपेसिटर एज सेंसर। कैपेसिटर फॉर सिग्नल प्रोसेसिंग। व्हाट आर अल्ट्रा कैपेसिटर also known as super capacitor high capacity capacitor with a capacitance value much higher than other capacitor but with lower voltage limit। The basic unit of capacitance is farad। 1 millifarad is equal to 10 to the power minus 3 farad। 1 microfarad is equal to 10 to the power minus 6 farad। 1 nanofarad is equal to 10 to the power minus 9 farad। 1 picofarad is equal to 10 to the power minus 12 farad। Energy stored in a capacitor U is equal to half CV square। What is capacitance? Capacitance is the ratio of the change in electric charge of a system to the corresponding change in electric potential। Q directly proportional to V। Q is equal to CV। C is equal to Q by V। तो एठारे C होची capacitance of capacitor जहाँकि constant of proportionality। Combination of capacitor in series and parallel। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर जितेबाला कैपेसिटर गुड़िक पैरेलल कनेक्टेड होता से V सामान होता है किंतु चार्ज ऑन C1 एंड C2 इज डिफरेंट अलग चार्ज होता Q1 और Q2। C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 द चार्जेस ऑन कैपेसिटर Q1 इज इक्वल टू C1 by C1 plus C2 Q। Q2 इज इक्वल टू C2 by C1 plus C2 into Q। In case of more than 2 capacitors C is equal to C1 plus C2 plus C3 plus C4 plus C5 plus dot dot dot। जदि कैपेसिटर सीरीज रे थांदी ताले 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 हबा। The potential difference across C1 C2 is V1 and V2 हबा। V1 is equal to C2 by C1 plus C2 V2 is equal to C1 by C1 plus C2 into V। In the case of more than 2 capacitors the relation is 1 by C is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4 plus dot dot dot। जदि n प्रकार कैपेसिटेंस ऑफ C सीरीज रे थांती ताले इफेक्टिव कैपेसिटेंस C by n हबो। जदि n प्रकार कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C पैरेलल रे थांती ताले इफेक्टिव कैपेसिटेंस Cn हबो। इलेक्ट्रेंस रो फार्मूला हबो S is equal to 1 by C। कैपेसिटेंस रो यूनिट हबो फैराडे। 1 farad is equal to 9 into 10 to the power 11 start Faraday। 1 farad is equal to 1 by 10 to the power 9 half Faraday। Dimension of M inverse 1 L inverse 2 T 4 A square। Capacitance of spherical of C is equal to 4 pi epsilon 0 capital R। Question is 1000 small drop of liquid coagulate to form a large drop. How does the capacity of drop change? Answer of 4 by 3 pi r cube is equal to 1000 into 4 by 3 pi small r cube। तले capital R cube is equal to 1000 small r cube, capital R is equal to 10 small r,
तो कैपेसिटर हम सी इज इक्वल टू 4πε0 स्मॉल आर सी डैश इज इक्वल टू 4πε0 कैपिटल आर सी डैश बाई सी इज इक्वल टू 10 स्मॉल आर बाई स्मॉल आर इज इक्वल टू 10 सी।